Just a minute. Electrolytes. Yes, Purva. Yes, Purva. Electrolytes. Hello, ma'am. Am I audible? Yes, yes. Yes, ma'am. Electrolyte is a solvent which produces polarity when in water, like which has charge. Okay. थोड़ा सा इतना critical इतना बहुत complicated बता दिया. Electrolytes मतलब क्या? It reacts with solution. Okay, that is also fine. Next. और किसी को बताना है क्या आंसर? क्या हो रहा है? Can you see my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे थोड़ा इशू हो गया है. Zoom meeting का symbol ही नहीं दिख रहा. Okay, you can see my screen. It will continue. Fine. So, anybody else? Please elaborate on electrolytes. Yes. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Zoom का symbol. Fine. Vaishnavi Patil, yes, you can tell me. Electrolyte is an electrically conducting solution when it is dissolved in polar solvents such as water. सबके अलग अलग है. फाइन. मतलब आपका मीनिंग है कि ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं. दैट इज करेक्ट. इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब एग्जांपल. गिव मी एग्जांपल. सम एग्जांपल्स. Na plus K plus Cl minus. Na plus K plus Cl minus, right? Magnesium. Magnesium, Potassium. potassium. Water. L plus CO for Okay, चलो. Fe3 plus. हाँ? Iron. Ions, okay. So that is correct. So major extra intracellular electrolytes में, I will just give you the overview of what you are going to learn. So you know this unit is very important. Electrolytes मतलब you know our body is working on electrolytes only, right? So ये अपनी body का like mechanism, every mechanism is depending on electrolytes. Electrolytes means ions, charges. You know if your electrolytes what we can say proportion is less in our body, then what happens? We like or so we are going to, you know, electrolytes importance is very, electrolytes are very important for our body, right? So you have given examples like sodium, potassium, magnesium. HCl. HCl is an electrolyte, ma'am, in our body. Yes. So
So chloride ion. So all these electrolytes are very important. Okay, and we have what we are going to study in this major extra and intracellular. And you know, some ions are extracellular and some ions are intracellular. Intracellular means inside the cell, extracellular means outside the cell. Okay. So first we are going to learn how many compartments present in your body. Compartment means what? Intracellular compartment is there, extracellular compartment is there, interstitial compartment is there. So how much of how many ions present in which compartment, that we are going to study. And you know, ions are already, there are two types. These are the basics, you know that, but there are some students they don't know. That's why I have to explain that from basic itself. There are two type of ion, cations as well as anions are there, right? Sodium, magnesium, these are the cations. Chloride, phosphate anion, these are the anions. So as per, you have to study all the electrolytes types. And first, in this unit, you have to study very important three parts. ORS, oral rehydration solution, then physiological acid base balance. Physiological matlab it is related to our body. And what are the mechanism? Like हमने पहले यूनिट में मैंने आपको बताया था कि कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट का सिस्टम होता है, राइट? वो जैसे अपनी बॉडी में क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे वर्कआउट करता है, जब एसिडिटी बढ़ जाता है, लाइक एसिडोसिस होता है, अल्किलोसिस होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्किलोसिस, दैट इज रिलेटेड टू स्टमक. सेकेंड, हमको रेस्पिरेटरी का भी लर्न करना है कि रेस्पिरेटरी में कैसे increase of ions and decrease of ions होता है, that we have to study related to respiratory also. And third, we have to study related to renal also, related to kidney also. The physiological acid base balance is very important, very important point in this unit. And then first we will just see the introduction. First we will just see the introduction. Introduction में हम क्या पढ़ेंगे? Listen carefully. Introduction में हम क्या पढ़ेंगे? Which are the major compartments of body fluid? What is the meaning of electrolytes? What are the cations? Which are the cations? Then anions कौन-कौन से हैं? Then what is the role of electrolyte? ये हम first introduction that we will finish it today. Sorry. Then second, major physiological and major कौन-कौन से अपनी body में? Maybe you know there are so many ions in our body, right? There are so many ions present in our body, but which are the major one? Like sodium, calcium. You know, calcium is totally related to bones. If calcium deficiency हो जाता है तो आपको पता है hypocalcemia हो जाता है, calcium increase हो जाता है, hypercalcemia हो जाता है. Same related to potassium also. Potassium बढ़ गया तो hyperkalemia हो जाता है, hypokalemia हो जाता है. Same related to sodium ion. Hyponatremia हो जाता है, hyponatremia हो जाता है. These are the like ions, and we have to study the what is ions. So what is the importance of ion, function of ions, then what are the disorder, like कि उसका deficiency हो गया या increase हो गया आपके body में तो उसके disorder कौन से, that we have to study in major physiological ions. तो वैसे कितने ions हमको पढ़ने? 8 ions we have to study. Okay, sodium, potassium, calcium, magnesium, chloride, then phosphate, ऐसे 8 ions है वो हमको पढ़ने हैं. 4 cations, 4 anions. और वो चारों कैटेगरी का हमको क्या पढ़ना है कि बेसिक इंट्रोडक्शन. सोर्सेज भी पढ़ना है कि सोर्सेज ऑफ सोडियम क्या है, जैसे टेबल सॉल्ट है. सोर्सेज ऑफ मैग्नीशियम क्या है, जैसे कि नट्स, ब्राउन नट्स में मैग्नीशियम होता है. सोर्सेज ऑफ पोटेशियम क्या है, जैसे एग्जांपल बनाना है. देन वी हैव टू स्टडी द फंक्शंस कि सोडियम आयंस किसके लिए यूज होता है. तो आपको पता है सोडियम आयंस का इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत सारे हैं, राइट? बहुत सारे. Starting from cardiac, there are so many role of sodium ions, right? Same we have to study. यही flow में हमको पढ़ना है major physiological ions. Then third part आता है electrolytes used for replacement therapy. This is what very important. Replacement therapy or we can say combination therapy. कॉम्बिनेशन थेरेपी मतलब क्या कि आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स का डेफिशिएंसी हो गया बॉडी में, तो आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस लाइक लिक्विड सॉल्यूशन दिए जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट का, रिप्लेनिशर बोलते हैं उसको, कि आपकी जो भी बॉडी में डेफिशिएंसी है उसको वापस बैलेंस करने के लिए यू हैव टू गिव दिस थेरेपी, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी, ERT भी बोलते हैं या ECT आल्सो यू कैन कॉल इट. नेक्स्ट है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. as I have already told you, this is also very important. And one more thing, आपको आपने IP के बारे में सुना है, राइट? इंडियन फार्माकोपेया. So ORS का जो ingredient है ना, मतलब composition है ना, I will take it from IP. That I will give you, so you can refer that. Okay, that is very important. Don't take ORS composition from any books or any reference books. That is very standard, and we have to take it from Indian Pharmacopoeia.
देन उसके बाद वी हैव टू स्टडी फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि वी हैव टू स्टडी रेस्पिरेटरी, रीनल एंड जो भी कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, अपने बॉडी में जो बफर सिस्टम्स प्रेजेंट है ना, दैट वी हैव टू स्टडी. Then these three monographs, sodium chloride, potassium chloride and calcium. These three monographs. So monograph का meaning आप सबको पता है, yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So these monographs also I am going to take it from IP only, because IP having all standard monographs. So and that I will explain you. तो monograph में आपको ना basically क्या पढ़ना है वो बताते हैं. First, if is there any name, जैसे कि sodium chloride potable salt बोलते हैं, वैसे उसके नेम होंगे तो नेम, सॉरी. सेकेंड थिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्ट और पर्टिकुलर मोनोग्राफ. थर्ड वन उसके प्रिपरेशन मेथड्स की, आप सोडियम क्लोराइड का प्रिपरेशन, सिंथेटिक प्रिपरेशन मेथड क्या क्या है वो. उसके बाद ऐसे की प्रोसीजर की, बाय व्हिच टाइप ऑफ टाइट्रेशन यू आर डूइंग द प्रोसीजर ऑफ ऐसे फॉर पर्टिकुलर सोडियम क्लोराइड. ठीक है, ऐसे मेथड्स एज वेल एज ऐसे प्रिंसिपल भी आप स्टडी, then uses. So these are the points comes under monograph of sodium chloride, parallel with potassium chloride and calcium chloride. Got it? So मेरा क्वेश्चन है, आप सबको ये समझ में आया कि आपको इस यूनिट में क्या पढ़ना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. चलो, so I guess सबको समझ में आ गया है कि इस यूनिट में क्या पढ़ना है, और this unit is very important. Okay, so we'll go to the next. So introduction, आपको पता है body consists of what? 70% of water. So these are the basic things you already know, but I'm reading it again. See, body consists of 70% of water. Intracellular water fluid inside the cells, that you can also call it ICM. Okay, extracellular water, or you can say extracellular fluid. Fluid is better word actually. Fluid is outside the cell, that is within interstitial tissue surrounding cells, blood, plasma and lymph. Okay, extracellular fluid कितने percentage होता है? 2/3 of body weight is water. 1/3 of water is within the cell, means inside the cell. 1/3 of water is extracellular in tissue, मतलब outside the cell. 25% of interstitial fluid. Interstitial fluid मतलब in between what? Between the cells. Okay. Then 5 to 8% in plasma, that is IV of intravascular fluid. And 1 to 2% of transcellular fluid. So ये proportion है, ये आपको इतना कुछ आपको इतना ही याद रखना है कि 70% ऑफ वाटर जो है बॉडी में, उसमें कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है कि आउटसाइड द सेल कितना है, इनसाइड द सेल कितना है, रिमेनिंग प्लाज्मा, ट्रांससेलुलर फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल जो ब्रेन में होता है, इंट्राओकुलर फ्लूइड जो होता है. ऋषिकेश करो आपका. Okay, so ये so you have to just study the percentage, how much amount of water is present inside the cell, outside the cell, interstitial fluid, right? And this see, these transcellular fluids also are there. CSF, that is cerebrospinal fluid. Intraocular means in eyes. Serous membrane means it is present in like serous brain में जो layers होते हैं, that layers contain this fluid also, right? GIT, gastrointestinal tract. उसमें भी जो gastrointestinal fluid present होता है, like HCl is there, then respiratory and urinary tract. So we have to these all fluids comes under 1 to 2%. That is transcellular fluid. मतलब ये particular organs related है, like eyes, brain, GIT tract. But remaining आपको ये याद रखना है कि definitions क्या है. So this is one image I have just taken it from Google. Body water, extracellular 33%, intracellular 66%. एक्स्ट्रासेलुलर में दो आते हैं, एक इंटरस्टिशियल आता है और प्लाज्मा आता है. प्लाज्मा कितना है? 8% और इंटरस्टिशियल कितना है? 25% है. ओके,
And next, this is one more image to understand better actually. See. इसमें क्या दिया है इन्होंने? इंट्रासेलुलर फ्लूइड इनसाइड द सेल। यहाँ पे ना ह्यूमन बॉडी बताया है, ठीक है। 60% ऑफ बॉडी वेट ये दिया हुआ है इन्होंने कि वो पूरे फ्लूइड्स होते हैं उसमें, ठीक है। सो इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है फ्लूइड इनसाइड द सेल दैट इज 40% ऑफ बॉडी वेट। देन इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब फ्लूइड बिटवीन द सेल्स दैट इज 15% ऑफ बॉडी वेट। एंड ब्लड प्लाज्मा, ये जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जैसे हमने ऊपर के डायग्राम में देखा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या आता है? प्लाज्मा प्लस इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कितना है? 50% ऑफ बॉडी वेट। और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ब्लड प्लाज्मा लिम्फ, देन इट इज 5% ऑफ बॉडी वेट, राइट। सो यस यू गॉट इट। इसके इस पे भी एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, वो तो हम लास्ट में देखेंगे। So this is a proper definition I have taken. Major compartments for fluid. First one, intracellular fluid, ICF, fluid present inside the cell, you know, example cytoplasm. Extracellular fluid, ECF, fluid present in outside the cell. Fluid present outside the cell. तो आपको कभी-कभी क्या आता है एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं आईसीएफ के एग्जांपल बताओ, ईसीएफ के एग्जांपल बताओ. सो डोंट बी कंफ्यूज, यू शुड नो दिस एब्रिविएशंस, राइट. सो सी नेक्स्ट इज आईवीएफ भी बताते हैं कभी-कभी. इंटरस्टिशियल को तो है नहीं शॉर्ट फॉर्म, बट इंट्रावास्कुलर को है आईवीएफ. सो आईवीएफ का और भी है दूसरा फर्टिलाइजेशन रिलेटेड, बट if it is related to fluid, so you should remember intravascular fluid. Intravascular fluid means what? Within blood vessels, that is 5%. Interstitial fluid between cells and blood vessels. Cells और blood vessels के बीच में जो होता है that is interstitial. Then transcellular fluid, आपके क्वेश्चंस होंगे तो चैट बॉक्स में डालो, at the end we will discuss that. जैसे मैंने आज कैसे सबके क्वेश्चंस क्लियर किया वैसे ही हम डिस्कस करेंगे. ये बीच में क्वेश्चंस किए ना डिस्टर्ब हो जाता है पूरा क्लास. So you just put your question in chat box. I will note down it and I will get back to you. Transcellular fluid देखो, cerebrospinal, pericardial and synovial. Pericardial मतलब yes. Can anybody tell me pericardial? Yes. पेरी मतलब क्या होता है? मैम पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती है हार्ट के चारों तरफ, अंदर जो फ्लूइड होता है उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं. Okay. पेरिकार्डियल क्या? सॉरी फिर से बताओ. मैम हार्ट के सराउंडिंग में मेम्ब्रेन होती है, उसको पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और उसके अंदर जो फ्लूइड होता है बीच में उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं. Yes, exactly. And synovial fluid? Synovial fluid? बिटवीन साइनोवियल जॉइंट्स. Yes, anybody? Krishnakant? No, sorry, Neha? Synovial fluid कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बिटवीन साइनोवियल जॉइंट्स, बॉडी के मतलब जॉइंट्स होते हैं ना बॉडी के नीज अंदर. नीज बताओ, मतलब किसी को समझ में आएगा, ठीक है. नीज के अंदर. नीज में भी जो नीज होता है उसमें ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है फॉर शॉक एब्जॉर्प्शन एंड ऑल. तो मोस्टली यही रोल होते हैं शॉक एब्जॉर्प्शन और या वो जो क्या बोलते हैं हम उसको फ्रिक्शन, प्रिवेंट फ्रिक्शंस ऑफ बोन्स, राइट. सो दैट इज लाइक वो फ्लूइड का इंपॉर्टेंस. सो this is the basic compartment. First intracellular, that is ICF, fluid which is present inside the cell. Then extracellular, outside the cell. For extracellular there are 3 subtypes. First one intravascular, second one interstitial, third one transcellular. Okay, I think this slide समझ में आ गया आपको? स्लाइड ये क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So why next portion is electrolytes. जो हमारा main portion है electrolytes. Major extracellular, intracellular electrolytes. So हमको extracellular भी पढ़नी है, intracellular भी electrolytes पढ़नी है. So electrolytes का important क्या है कि electrolytes जो होते हैं, जैसे आपने examples बताए, sodium ion, phosphate ion, calcium ion, magnesium ion. From each source, like from vegetables हमको कुछ ions मिलते हैं, from food items like from nuts, soybean. There are so many sources of these particular ions. We are taking it from outside for our body. Like why? Because these ions help in our body
for so many mechanisms. For cardiac activity, sodium ion and potassium. Then for bone activity, calcium ions are important. So there are then magnesium ions are important for renal activity, kidney related जो है ना उसके लिए magnesium ions very important. So आपके body में magnesium ions present होने चाहिए. जैसे आपने 12th में पढ़ा होगा वो किडनी का जो क्या नेफ्रॉन होता है, राइट? नेफ्रॉन में डीसीटी, पीसीटी, लुकोफिन ले, राइट? वही होता है ना, मैं भूल गई. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपने देखा होगा कि आयंस का रीअब्जॉर्प्शन होता है, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So that's why अपनी बॉडी जो है ना पूरी आयंस पे चलती है. If it will get disturbed, so we will suffer from disorders. So we need disorders. So we have to maintain the balance. So जब भी आपको पता है आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है, मतलब सोडियम आयन आपकी बॉडी में कम हो गए हैं. Like this, you know that, right? So that we are going to study in this unit. So see, first definition: electrolyte are substance when dissolved in solution, it separate into ions and it able to carry an electrical current. Electrical current, or we can say charge. Okay. So there are two types: cation and anion. Cation means positively charged electrolyte. That is example Ca plus यहाँ पे लिया है Ca2 plus. वहाँ पे और एक लिख सकते हो आप Na plus, Mg2 plus. There are so many examples. Then anions, that is negatively charged electrolyte. Example, sorry for थोड़ा सा मेरा ग्रामेटिकल मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, टाइप करने के लिए थोड़ा जल्दी में देखिए. तो ये जो है सुपरस्क्रिप्ट होता है Ca प्लस प्लस, A माइनस भी सुपरस्क्रिप्ट होता है, ये भी ठीक है. कंसीडर कर लो थोड़ा सा, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है. सो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट है क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन एंड फॉस्फेट. सो दीज आर द anions. So number of cation must equal to number of anions for the homeostasis to exist in each fluid compartment. Electrolytes in body fluid compartments like intracellular के फिर से मैंने और एक एग्जांपल दिया है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस सॉरी. एंड एक्स्ट्रासेलुलर का क्या है? सोडियम. एक्स्ट्रासेलुलर कौन कौन सा आयन है? सोडियम आयन, क्लोराइड आयन एंड बाइकार्बोनेट. सो ये जो क्वेश्चन है इस पे जरूर क्वेश्चन आता है, ये तो आपको याद ही रखना है कि which are the intracellular ions and which are the extracellular. Extracellular means outside the cell कौन कौन से आयन प्रेजेंट होते हैं, that is extracellular. तो आपको याद रखना है ये न्यूक्लियस इज एक्स्ट्रासेलुलर एंड पोटेशियम इज इंट्रासेलुलर. रिमेनिंग याद रहा तो भी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, नहीं रहा तो भी चलेगा. बट सोडियम पोटेशियम दिस टू आयंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये भी याद रखो, Mg+ यहाँ पे लिखा हुआ है. अब थोड़ा सा नोट डाउन करते चलो कि क्या क्या पॉइंट मैंने लिए हैं, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. की नहीं तो मैम आपने स्लाइड्स ही नहीं दिए, कब स्लाइड्स देंगे, ये क्वेश्चंस मत पूछो. अब जब मैं पढ़ाती हूँ थोड़ा सा नोट डाउन करो, ठीक है. नोट्स निकालते रहो कि मैम ने इलेक्ट्रोलाइट में ये कैटोन आयन, एटलीस्ट शॉर्ट इन शॉर्ट तो भी नोट्स निकालो, राइट? दैट विल हेल्प यू. अक्षय इथनं पिशव्या आण ना. इसका है, म्यूट करो माइक. चलो, तो ये स्लाइड समझ में आया आपको? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आपको लिखना होगा ना ये बात में, तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट बिकॉज दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंट्रासेलुलर पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, एक्स्ट्रासेलुलर सोडियम क्लोराइड. यस यस यस, यू हैव टू राइट इट. थोड़ा थोड़ा सा एटलीस्ट इन शॉर्ट नोट्स निकालो. किसी ने मुझे पूछा चैट बॉक्स में कि राइट कर जब लिखना है क्या, तो यस राइट डाउन दिस. लिखो, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका तो पता ही होना चाहिए. आई विल टेक 2 मिनट ऑफ ब्रेक. राइट डाउन दिस स्लाइड. ये प्रीवियस स्लाइड भी लिख दो. ये भी लिखो, मेजर कंपार्टमेंट्स फॉर फ्लूइड. मैम एक बार फर्स्ट स्लाइड से बता सकते हो क्या, फिर से स्क्रीनशॉट लेने के लिए? बट लिखना है आपको अभी. सी दिस वन इज इंट्रोडक्शन वाला स्लाइड. Second one is right down this.
Done? हो गया आपका? Write down this slide, second one, and take 2 minutes of break. Just 2 minutes of break. Yes, done? No, ma'am. No need to draw the diagram. And which diagram? ये पीछे एक डायग्राम था ना फर्स्ट स्लाइड सेकंड स्लाइड में Oh, yes. Okay. डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था इससे डन ये स्लाइड हो गया होगा आपका So see this you have to write inorganic ions present in our body fluid. So anionic जो है HCO3 bicarbonate ion, chloride, sulfate, phosphate. Then cationic sodium, potassium, magnesium and calcium जो हमको ये स्टडी करनी है 8 ions. Major physiological ions, cations, anions. So ये भी मेंशन करो आपको क्या है ये भी थोड़ा सा लिखो थोड़ा सा राइटिंग पार्ट होना चाहिए कि SO4 2 minus. टाइम हो जाता है
हाँ यस यस SO4 2 माइनस राइट। यहाँ पे ना करेक्शन करो बराबर SO4 2 minus. SO4 2 minus. SO4 2 minus SO4 2 minus. यहाँ पे लिखा ना मैंने अभी ये लिखा। थोड़ा बहुत आपके नोट्स में चाहिए ना, इसीलिए पीपीटी तो आपको मिल जाएगा बट सब लोग पीपीटी नहीं नोट डाउन करते हैं। यू शुड नो एटलीस्ट पॉइंट की कौन सा पॉइंट में पढ़ा रहेगा। तो हो गया कि बता दो मुझे फिर आई विल गो टू द नेक्स्ट। Okay, so these are some cations, these are some anions which we are going to study next. Yes, so these are the units. Actually, electrolytes are expressed in terms of milli-equivalent per liter rather than weight per volume. Weight per volume, instead of that, you can express this milli-equivalent per liter. Okay, electrolytes का जो concentration होता है ना, आप milli-equivalent per liter में express कर सकते हो. The next equivalent weight is obtained by dividing the atomic or molecular weight by the valence. Okay, so milli-equivalent per liter is equal to milligram of substance per liter. Okay, जितना milligram of substance मतलब जो होगा पर लीटर आपको कैलकुलेट करना है। एंड यू नो इक्विवेलेंट वेट तो आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं। कंसीडर करो कि कुछ आपको वैलेंसी पता है कैल्शियम का 2 है, सो मोलेकुलर वेट डिवाइडेड बाय उसका जो वैलेंसी है वो करने का, सो यू विल गेट योर इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। सो राइट डाउन दिस आल्सो। इतना एक लाइन ही लिखो पहला, बस इतना एक लाइन लिखा तो बस हो जाएगा। दिस वन पहला लिख दो, नो नीड टू राइट एंड दिस वन लास्ट, फर्स्ट वन एंड लास्ट वन। Any question put in chat box. Next is role of electrolyte. This is very important actually. See. So ये जो है मैंने रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसे डाला है, इसमें कंबाइंड रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की जनरल क्या क्या होते हैं रोल्स। ओके, सो रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या है, इसमें जनरल रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या होते हैं। कंबाइनिंग ऑल आयंस, सोडियम पोटेशियम जितने भी आयंस अपनी बॉडी में प्रेजेंट है उसका जनरल रोल क्या होता है वो मैंने स्लाइड में डाला है। सो जस्ट यू कैन सी हियर they regulate the osmotic pressure in cells and help maintain the function of muscles and nerves. Okay, तो ये तो पता ही आपको function of muscle and nerve cell में क्यों maintain रहता है, right? What is the role of electrolyte? The nervous system function में भी बहुत important है, brain में, because you know there are so many fluids present in brain also. So which all are running on the base of electrolytes. Because of electrolytes only. Then for muscle function, you know the calcium ions. For bone and muscle, calcium ions are very important. For hydration, you know water molecule. Then sodium ions, potassium ions. For hydration, you know these ions are very important, and to maintain internal pH level. So this is the combined role. For when you will study each and every ion, that time you will come to know what is the particular role of sodium, what is the particular role of calcium, particular role of potassium. So ये कंबाइन आपको समझ में आ गया कि रोल क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स का, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आपको डिहाइड्रेशन हो गया मतलब आपके बॉडी में आयंस डेफिशिएंसी हो गया, या
So what you have to do, you have to take the liquid, right? Water आपको लेना पड़ेगा या glucose solution. So your electrolyte balance will be maintained and you feel hydrated. So that is what for proper hydration also you need electrolyte. For muscle function also you need electrolytes, and it mostly regulate the osmotic pressure in cells, right? For in muscles and nerve cells. So these are the basic role of electrolyte. इसका screenshot ले लो, ये तो आपको पूरा detail में मैं पढ़ाने वाली हूँ. But you should know what is the basic role, and it is also helps to maintain the pH level also. Okay, so that is the main importance. Just take the screenshot. Now, first, write down these major physiologic lines. This is what very important. First one is sodium. Sodium ion, okay. So in normally human body contains about 1.8 gram per kg of sodium ions. Adequate amount of sodium is present in the daily diet. ये कोई नहीं पूछता, ये this is important. Sodium is most abundant extracellular ion. So write down this. Sodium is most abundant extracellular ion. Abundant मतलब what? In large quantity. Or in maximum quantity it is present in your body. So that is extracellular ion. Sources तो आपको पता ही है, sources table salt, milk, baking powder, meat, some vegetables. ये भी write down this also. Table salt, milk, baking powder, meat, and vegetables. Daily requirement is 3 to 5 gram of normal iron. Sodium is most abundant extracellular ion. Daily requirement is 3 to 5 gram for normal adult. And next, third sentence is very important. Sodium level in the blood is controlled by aldosterone and antidiuretic hormone, that is ADH. Okay, इसका ना आपको mechanism है आगे next इसमें. अभी सिर्फ इतना याद रखो कि सोडियम लेवल कौन मेंटेन करता है, ADH and aldosterone. These hormones. Then लिखा सबने? No, ma'am. मैम लास्ट लाइन भी लिखनी है क्या? Yes. Sodium level in the blood is controlled by ADH and aldosterone. एक्चुअली ये मैं क्यों लिखने के लिए बोलती हूँ कि ये आपको हेल्प हो जाता है कि क्या क्या पढ़ना है, सोडियम आयन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है. दैट्स व्हाई एक्चुअली इसका मुझे टेबल बनाना था, बट ये हो रहा है कि टेबल फॉर्मेट में आपको जल्दी से जब रिवीजन करवाऊंगी ना मैं आपका, जब रिवाइज के लिए टेबल फॉर्मेट में मैं बना दूंगी. इसका टेबल फॉर्मेट में क्या, इसका इंट्रोडक्शन, रोल, देन उसके फंक्शंस, एंड देन डिसऑर्डर्स, कॉजेस ड्यू टू दिस deficiency or increasing level of sodium ions. Okay, so right now you just go through these slides slowly. So see, next is you know, when sodium levels decreases, that is known as hyponatremia. Okay, and why this these are the causes. First one, loss due to excessive urination, as in case of diabetes insipidus. ये पता है आपको diabetes insipidus? कभी सुना है आपने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. In biology. Yes, ma'am. बायोलॉजी में पढ़ा है क्या आपने? हाँ मैम. Yes, Yes, ma'am. ओके, क्या होता है उसमें डायबिटीज इंसिपिडस में? Deficiency of ADH. डिफिशियंसी ऑफ सोडियम. ADH, antidiuretic hormone. ADH. Okay. And what are other symptoms? Do you know what are the symptoms of diabetes insipidus? मतलब excessive urination तो लिखा है, मतलब इसमें सोडियम आयन का लॉस होता है, इसीलिए एक्सेसिव यूरिनेशन होता है. जैसे मैंने आपको बताया अभी किडनी का, राइट, कि उसमें जो आयंस होते हैं वो रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट, कि पीसीटी मतलब क्या, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, राइट, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब. Yes, ma'am. पीसीटी मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब. लिपोफिली, सो लिपोफिली में मोस्टली आई गेस क्लोराइड आयन रीअब्जॉर्ब होता है. पीसीटी में सोडियम आयन, एंड डीसीटी में, डीसीटी का नहीं याद मुझे, डीसीटी में मतलब पर्टिकुलर आयंस उसमें एब्जॉर्ब होते हैं ना. मैम डीसीटी में सोडियम आयन एब्जॉर्ब होता है. डीसीटी में सोडियम आयन होता है. ओके, फिर पीसीटी एंड लिपोफिलिया में
पीसीटी में मोस्ट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब होता है और SCO3 माइनस H+K+ एब्जॉर्ब होता है। और लूप ऑफ एल्नी में जो लोअर पार्ट होता है उसमें वाटर एब्जॉर्ब होता है और अपर पार्ट में वो आयन। ओह राइट राइट फाइन, चलो ठीक है, मैं भूल गई थी जिसमें कौन सा कि बायोलॉजी बहुत दिन में। सो जैसे दीपक ने बताया कि फर्स्ट पीसीटी में H+ आयन K+ वाटर मॉलिक्यूल ये ऑब्जर्व होता है और डीसीटी में मोस्टली सोडियम आयन ऑब्जर्व होता है। ओके, सो इफ दैट फंक्शन मतलब एडीएच हार्मोन नहीं होगा आपकी बॉडी में, कंट्रोल नहीं मतलब कर पाया, तो दिस इज डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ सोडियम आयन and due to excessive sodium secretion in metabolic acidosis. So ये टर्मिनोलॉजीज है ना, ये भी मुझे आपको पढ़ाना है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, बेसिक एसिडोसिस, बेसिस अल्कलोसिस, एक्चुअली वो पढ़ाना चाहिए। ठीक है, मैं अभी नेक्स्ट पढ़ाती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तो टाइम भी नहीं है। एंड देन इन एडिशन डिसीज पता है आपको? ये भी सुना होगा आपने, एडिशन डिसीज। दो तीन स्टूडेंट Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, क्या होता है उसमें? aged paralysis something. मैम एड्रेनल फेल्यूर होता है, एड्रेनल फेल्यूर। यस, एड्रिनल फेल्यूर। Yes, ma'am. होता है उसमें। ओके, और क्या होता है एडिशन डिसीज में? मैम वो ब्लड प्रोटीन एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, किसी को पता है? above the kidney. किडनी के Above it ऊपर. Which kidney? बोथ ऑफ किडनी Both kidney. अपर पार्ट मैम। Above the kidney, करेक्ट है क्या? नो मैम, जक्स्टा मेडुलर जो पार्ट होता है ना उसके अबव होता है। यस मैम। जुक्स्टाग्लोमेरुलर पार्ट के उसके अबव होता है। एड्रिनल ग्लैंड पूछा है मैंने, बेसिक क्वेश्चन। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे होता है? Top of the kidney. टॉप ऑफ द किडनी। उतना हमें पता होगा तभी बस। ठीक है, सो एड्रिनल ग्लैंड टॉप ऑफ द किडनी होता है। एंड व्हिच हार्मोन इट रेगुलेट्स? कोर्टिसोल। हार्मोन Adrenaline. एड्रेनलिन। राइट। एंड एडिशन डिसीज में क्या होता है? एड्रेनल फेल्यूर हार्मोन प्रोड्यूस नहीं Not able to produce it. हार्मोन। So in which decrease exertion of hormone aldosterone which is antidiuretic in nature. उसमें क्या होता है कि जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वहां से लेवल कम हो जाता है, दैट्स व्हाई दिस डिसीज कॉजेस। ओके, सो ये भी उसी में आता है। तो ये मैंने एक इमेज यहाँ पे डाला है। हाइपोनेट्रियम में क्या हो जाता है कि टायर्ड जल्दी हो जाते हो बिकॉज डिहाइड्रेशन प्रोसेस। ओके, सो ये उसका सिम्टम है एक्चुअली, वो भी थोड़े डिटेल में ऐड करने को। तो आज थोड़ा सा हम ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद कल मैं और 2-3 स्लाइड इसमें ऐड करूंगी। Then we will again I will teach you this portion. Okay. See, यहाँ पे मैंने हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया मतलब क्या होगा फिर? यस, हाइपरनेट्रीमिया Excess of sodium in body. excess Excess of sodium in body. excess of sodium, right? So उसके symptoms क्या है? Severe डिहाइड्रेशन होता है, उसके बाद हाइपर एड्रेनलिज्म हो जाता है। वो आपको पता है, कुशिंग सिंड्रोम आपने 12th में पढ़ा होगा आई गेस। कौन से 12th में पढ़ा है ना कुशिंग सिंड्रोम आपने? यस मैम। यस मैम। कौन से यूनिट में पढ़ा है? किडनी का जो रीनल वाला यूनिट है उसमें पढ़ा होगा शायद। सर्टेन टाइप्स ऑफ ब्रेन डैमेज कैन आल्सो ऑकर। दिस इज वेरी ये ना, ये बहुत क्रिटिकल इशू है। सर्टेन टाइप्स ऑफ ब्रेन डैमेज बिकॉज ऑफ हाइपर अब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस और प्रेजेंट ऑफ सोडियम आयंस more in large amount. Okay, so brain damage ये आपने देखा होगा कभी कभी। this case occurs so many times, brain damage and excessive treatment with sodium salt। ये भी इसीलिए सब लोग बोलते हैं कि ऊपर से नमक मत लो ऐसे वैसे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन जो है अपने बॉडी में ऑप्टिमल होना चाहिए, दैट्स व्हाई। ओके, सो दीज आर सम सिम्टम्स ऑफ द हाइपरनेट्रेमिया, सीवियर डिहाइड्रेशन। सेकंड वन हाइपर एड्रेनलिज्म, थर्ड वन सर्टेन टाइप्स ऑफ ब्रेन डैमेज एंड फोर्थ वन एक्सेसिव ट्रीटमेंट विद सोडियम सॉल्ट। ओके, देन लास्ट लो सोडियम। इसमें यहाँ पे मैंने 2 और डाले। लो सोडियम लेवल हुआ तो आपको क्या होता है? डिहाइड्रेशन, एसिडोसिस। एसिडोसिस मतलब क्या कि एसिडिक सिक्रेशन बढ़ जाता है बॉडी में। एक्सेस लीड्स टू व्हाट? एडिमा। एडिमा मतलब व्हाट? यस, एडिमा का मीनिंग मैंने बताया था।
swelling, swallowing, Swallowing. Swelling, swelling. swelling, inflammation. Inflammation. inflammation, सो एंड हाइपरटेंशन तो पता है, हाइपरटेंशन भी पता होगा नहीं, हाँ ये तो मैं भूल ही गई। सोडियम लेवल का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो हाइपरटेंशन होता है, बीपी बढ़ जाता है, राइट? सो दैट इज द थिंग, हाइपरटेंशन। नाउ दीज आर द फंक्शंस। इससे कहां गया सोडियम? आपको स्क्रीन पे क्या सभी दिख रहा है क्या, कि स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है? Clear, ma'am. क्लियर है? सो ये जो फंक्शंस है ना, ये फंक्शंस नोट डाउन करना। दिस वन, फर्स्ट वन व्हाट, transmission and conduction of nerve impulses, this is very important. Second, responsible for osmolarity of vascular fluids, regulation of body fluid levels, sodium shift, ये तो आपको पता है ना कि कंडक्शन जो होता है, contraction of heart muscle because of ions, sodium and potassium जो shift होते हैं inside the cell, out of the cell. Sodium heart की जो pumping activity होती है because of sodium and potassium ion. Do you know this? Yes, ma'am. yes ma'am, तो आपको पता है ना, बेसिक है, ये बेसिक है, बट कैसे होता है एग्जाम में आपको आना चाहिए। देन इट असिस्ट Ma'am left the meeting. Accidentally. क्या था? अपन चले। चलो क्या करते हैं? करा नहीं Meeting is being recorded, guys. क्या बोला बे? जो बोलना है बोलो, मीटिंग रिकॉर्ड किया जाता है।